जय गुरु जी संगत जी। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमन। कल का थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि हाउ स्वामी जी इज हिज गुरुदेवा बंगाली बाबा, उन्होंने बोला था कि उनको कि पर्टिकुलर साधना करनी है, दैट यू गॉट टू डू इट फॉर 41 डेज। पर 39th डे पर पहुंचते ही स्वामी जी की थोड़ी बस हो गई, एंड देन ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप द साधना. And then he came across a woman who was singing and dancing. And the theme of the song, was that there is a very little oil in the vessel of life, and the night is vast. So this had profound, very deep effect on Swamiji, and he thought of going back to finish his sadhana for the remaining 2 days. And then Swamiji thought that, this because of this woman, I was able to finish the sadhana, so I'm going to be very very thankful to him, and I want to meet her. So Swamiji wahan jaate hain, milte hain. Though initially she was reluctant, but jab Swamiji addresses that woman as a mother, then she also promises to Swamiji that she would be a mother to others as well, not only him. Now she would meet everyone, and she would treat everyone as a mother. सो उसके बाद इतना इफेक्ट होता है उनपे, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. शी गोज टू वाराणसी एंड देन शी स्टार्ट्स चैंटिंग आउट देयर गॉड्स नेम. जब भी उनसे कोई बात भी करता था, उनके मुख से सिर्फ रामा रामा ही निकलता था. एंड देन फाइनली इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उनमें that voluntarily, I think she cast off her body, and she knew that she was going to kind of leave this earthly abode. तो वो बोलती हैं कि इस तरह से she'll be casting off her body, क्योंकि उनमें इतनी deep awakening आ जाती है. तो ये होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो आप पहले होते हैं वो अब नहीं रहते. जैसे गुरुजी कहते हैं ना, कल तो आज बेहतर हो जाओ, आज तो कल बेहतर हो जाओ, बस नमे होंदे रहो, अपने आप को चेंज करो. चेंज इज ऑलवेज गुड इफ यू चेंज फॉर बेटर. Otherwise your life's gonna become really really stagnant. So it's very very essential to change. Okay. So स्वामी जी ने ये भी हमें सिखाया कि कभी भी अपने आप को कंडेम मत करें. राइट, अपने आप को कभी भी इतना मत सोचें. डोंट लेट दैट गिल्ट फैक्टर कंज्यूम यू. और फिर चाहे तुम जितने भी बुरे हो, तुम्हारा जो भी पास्ट रहा हो, बिकॉज कहते हैं ना, एक वो कोट है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर. सो इस तरह से होता है. और जो ट्रू सीकर होता है ना, he wants to attain freedom from all the bondage and miseries and all that. फिर हमने ये आगे पढ़ा कि कैसे स्वामी जी उन साधु से मिले जो 18 साल के थे, तब उनके हाथों अपने फादर का मर्डर हो गया था, which obviously he didn't want to do. But when he came back from school, he learned that some villagers had really murdered his father out of jealousy. So in that fit of anger, he couldn't control himself, and he also murdered them. And after that he just fled to Himalayas. वहां जाके उन्होंने इतनी भक्ति भी की और हिमालयन योगीज के साथ भी रहे, but he never hid his past. वो सबको बता देते थे कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है. Then everyone started calling him Naga Baba. और उसके बाद इवेंचुअली जब जज के पास उनका केस भी आता है, he was exculpated, he was acquitted, बिकॉज कोई चार्जशीट तो होती नहीं है. और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, that स्वामी जी feels that ऐसे फेवरेबल एटमोस्फेयर होना चाहिए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ जाए क्रिमिनल्स में, उनको भी मौका देना चाहिए रिफॉर्म होने का. नहीं तो इस तरह ही जेल में उनकी सारी उम्र वो सड़ते रहते हैं उसके अंदर. तो स्वामी जी ने ये भी बताया, डिजायर इज द मदर ऑफ ऑल मिजरी. और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे दुनियावी, उनको बस हम मीन्स समझे. Otherwise they can create obstacles for us. And then finally we learned that self surrender is the most important thing. And then we also learned so many beautiful things, that simple living honi chahiye, thoughts hamari elevated honi chahiye, and then outer beauty se zyada inner beauty hai. Because I also feel that
outer beauty attracts, but inner beauty really captivates you. And true beauty basically comes from within. Outer beauty is just transitory and it's ephemeral. वो तो जाके ही रहेगी, पर जो inner beauty है वो आप ऊपर की दुनिया में भी अपने साथ लेके जाते हैं. So then we learn renunciation is a path of fire. और ये भी स्वामी जी ने बताया, वो तो कोई फायदा नहीं ना, केव में बैठकर आप दुनियावी चीजों का सोचें तो और आपको मिजरेबल बना देता है. जो भी आपकी हिडन डिजायर्स हैं वो और उजागर होती हैं. एंड देन हिज मास्टर टॉट हिम टू ग्रो इंडिपेंडेंटली. उनके मास्टर ने बहुत उनको टेम्प्ट करने भी की कोशिश की, तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाओ. उनके आगे जवाहरात की ढेरी लगा दी. और because he said path of renunciation is like walking on the razor's edge. It's not a child's play, it's not like walking in the park. It's really, 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 it's full of dangers and full of it's like a fire, passing through the fire. So ये भी हमने सीखा कि selfish जो desire होती है ना, it hampers your growth, it impedes your growth. तो fearless होना बहुत जरूरी है. दुनियावी attractions आती हैं, पर उनसे पार लगा के ही जो renunciate जो करते हैं, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं. And then we learned that how Swamiji was ordained as Swami, finally by his master. तो फिर स्वामी जी को भिक्षा भी मांगनी पड़ी. तो बट जैसे उनको अच्छे मतलब सिल्की कपड़े डालने का शौक था, तो उसमें तो जब जाते थे तो लोग सोचते थे कि ही इज सच अ हैप्पी मैन एंड ही इज वेयरिंग रियली गुड एंड स्नैजी अटायर, सो व्हाट इज ही डूइंग हियर विद अ बोल इन हिज हैंड. तो स्वामी जी को फिर मतलब इस तरह से जब एक औरत ने भी उनको बहुत बुरा भला कहा, एंड literally she called him names, so Swamiji felt so bad. पर अब उनके मास्टर ने कहा कि now you have to grow independently. उसके बाद स्वामी जी को ऐसे लगा कि now I'm gonna be independent and I'm just going to rely on God and nothing, no one else. So I will just live by His word and I'll meditate. और उसके बाद बट उन्होंने ये भी कहा, no, I'm not gonna beg alms, पर उनको ये भी तो पता लगा कि begging alms is a must for monk. क्योंकि चाहे दूसरों के लिए ह्यूमिलेशन हो, पर देखो किसी से भिक्षा मांगनी कोई आसान नहीं होती, उसमें आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है और आपको बहुत विनम्र कर देता है. तो फिर स्वामी जी ने ये भी सोचा, अपना सीखा कि that who totally live on the grace of the Almighty receive the necessary food to eat and shelter to live. तो कहते खाने की क्या चिंता करनी, शेल्टर की क्या चिंता करनी, जब मेरा फेथ ऐसा होना चाहिए. I will just believe till the last breath of my life that God alone is my property, and depending on any other except God will bring disaster in my life. तो finally उन्होंने कहा जो भी है अब मेरा परमात्मा से समर्पण है, जब मुझे मांगना है तो उसी से मांगना है और उसी पे भरोसा रखना है, मुझे कहीं इधर उधर नहीं देखना. And finally I know my Lord is before me and he'll be very nourished. He's gonna provide everything to me. And फिर सुन उनके मास्टर ने चाहे उनके साथ थोड़ा सख्ती का बर्ताव किया लास्ट में, because he wanted to grow him independently कि अब तुम भी स्वामी बन गए हो, so how long you gonna depend on me, तो इस तरह से स्वामी जी की सोच में बहुत ज्यादा फर्क आ गया. उसके बाद the new chapter is a constant persecution. Swami ji कहते, at the age of 21, I lived in a thatched hut on a bank of the Ganges 5 miles from Rishikesh. Because I lived alone, many people thought I was a great sage. क्योंकि स्वामी जी अकेले रहते थे तो सबने सोचा ये तो बहुत पहुंचे महात्मा है. तो स्वामी जी कहते भी क्या है कि if you isolate yourself ना and you wear funny garb, have some scriptures near you, even though you never study them, and ignore everyone who comes to see you and then people conclude that you must be a great Swami. तो हमारे देश में तो वैसे ही बड़े vulnerable भक्त होते हैं. स्वामी जी कहते क्या है, अपने आप को आइसोलेट कर लो, एक चोला सा पहन लो, थोड़े से ग्रंथ स्क्रिप्चर्स रख लो, चाहे तुम उसको पढ़ो ना पढ़ो, और दूसरों के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड रखो, ignore them, and everybody's gonna conclude that you are a really, really great Swami. So people would arrive to see me all day long. I did not have any time to do my practices. From morning till evening, they would bow before me and offer flowers, fruit, or money. For a while, I exulted in it. तो obviously अब किसी को ऐसी attention मिलेगी तो स्वामी जी कहते ठीक है, मैंने भी बड़ा ठीक है उसको enjoy किया, मेरे लिए फूल लाए, फल लाए, पैसे रखे. But स्वामी जी कहते, but slowly it began to repel me. I thought, what is all this? It's sheer waste of time.
I started getting angry with visitors. So जब ज़्यादा होने लगा, then Swami ji, they started getting on his nerves and could take it anymore. तो वो कहते फिर मुझे गुस्सा आने लगा visitors पे. The people reacted, how is it possible for a Swami to get angry? He's just pretending to be angry to avoid us. And they came in even great numbers. तो लोगों ने तो सोचा कि एक स्वामी तो इतना गुस्से वाला नहीं हो सकता. हमें लगता है कि हमें प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि ये अवॉइड कर सके हमें. तो उसका असर क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ज्यादा बढ़ गए वो आने. That really irritated me. Swamiji कहते, oh God, it irked me like anything. That really irritated me. I completely lost my calm and balance and started calling visitors bad names. तो स्वामी जी की भी मतलब बस हो गई थी. उन्होंने भी ऐसे बुरा भला उनको कहना शुरू कर दिया. But they would respond, sir, your bad names are like flowers for us. They are blessings. I had to run away from that place. I thought to myself, I still have not conquered my anger. तो वो जो भोले वाले लोग थे वो कहते हैं कि नहीं, जो इनकी गाली है ना वो हमारे लिए प्रसाद ही है, फूलों की तरह ही है. स्वामी जी अल्टीमेटली कहते अब कोई चारा नहीं, अब तो भागना ही पड़ेगा. बट फिर भी उन्होंने सोचा कि जो मर्जी हो जाए, मेरे साथ ऐसी स्थिति आई, फिर भी मैंने अपने गुस्से को तो खोया ना. दैट मीन्स अभी भी मेरा वो एंगर है. माई एंगर इश्यूज आर स्टिल लिंगरिंग, सो आई हैवंट overcome. Okay, so this happens to many renunciates. They are constantly disturbed and distracted by visitors. A Swami must learn not to create attraction and not to live in such a way that his practice is interrupted. A Swami's life is a constant persecution. People believe he's high above any ordinary human being. In India, Swami means one who is all powerful, a healer, a preacher, a doctor, and much more. A Swami is put in such a difficult situation that it would drive an ordinary person crazy. People do not realize that some Swamis are still beginners on the path, that others have trodden the path a bit, and that only very few have attained the goal. The lack of differentiation creates expectations which confuse both the people and the Swamis. It is not easy to extricate oneself from this confusion. Whenever I was truthful in telling people, I am still practicing, there is nothing to share, please leave me alone, they would interpret these words in whatever way suited them and come to me more and more. When I lived far in the woods, I was still disturbed. Sometimes I became fed up with this Swamihood. It's not necessary for one to wear the garb of a renunciate to attain enlightenment. What actually matters is the constant spiritual sadhana. ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं. कहते कुछ जरूरी नहीं है कि आपको enlightenment के लिए चोला पहनना है या अपना सब कुछ छोड़ के ही जाना है. कहते एक्चुअली स्पिरिचुअल साधना क्या है? अपने माइंड को डिसिप्लिन करना, एक्शन में, स्पीच में. कहते हाउ वंडरफुल इट इज टू बी स्वामी बट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ रियल वन. ये स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखो स्वामी तो कोई भी बन सकता है, जो असली स्वामी बनना मुश्किल है ना. और कहते हैं हमारा जो देश ऐसे है, स्वामी जो बता रहे हैं कि चाहे अभी कोई नायब हो, कोई नया हो, उसको भी बहुत ऊपर उठा देते हैं. कहते अब इनको कैसे समझाएं कि ये तो नया अभी रास्ते में है. But people are like that. जहां भी वो देख देते हैं तो उसी वक्त ही वहां पर उसी तरह लोग आने लगते हैं. और because they think people believe कि नहीं, ये तो हमारे ordinary लोगों से हमसे बहुत ऊपर है. Okay, so next is living on Mount of Pebbles. Swami ji कहते हैं, if you are a seeker after enlightenment, doing your practice and people repeatedly come and disturb you, you will not be able to complete your practice successfully. ये तो होता ही है. कहते हैं अगर हम इस पाथ में हैं, स्वामी जी कहते हैं, तो अब हमें लोग तो छोड़ते ही नहीं है, डिस्टर्ब करते रहते हैं. अब कब हम अकेले बैठे भक्ति में बैठे, अपनी सुध लगाएं परमात्मा के साथ. कहते हैं yet in India it is a custom that if you're a Swami, you have to answer the questions of all those who come to you. तो बिल्कुल ठीक है. स्वामी जी कहते हैं कि मतलब हमारे भारत देश में तो ऐसा कोई स्वामी बन जाए तो वो सोचते हैं बस ये तो पूरा रब है, अब ये एक चीज का हमें आंसर देंगे. एंड दे आर मेंट टू डू दैट. Okay, many people think that Swamis have the remedies for all the ills of life. Such people sometimes benefit from this belief and are healed. The result is likely to be exaggerated stories and the acceptance of a beginner as an accomplished healer. वो तो है ही. सब लोग सोचते हैं कि भाई इनके पास तो सब उपाय हैं बीमारियों के, और जरा सा उनको बेनिफिट होने लगता है, हील होने करते हैं, तो पता नहीं वो इतना बड़ा चढ़ा के कहानियां बना देते हैं. कहते this poor creature cannot continue his practice and forgets his goal. Obviously कोई भी होगा भटक जाएगा, इतनी अटेंशन मिलेगी, इतनी फॉलोइंग हो जाएगी,
कहते he wastes his time and life remaining a Swami but unrealized. One of the best to do one's sadhana. Okay, one of the best ways to escape from such problem is to remain in disguise and to do one sadhana. जैसे गुरु जी भी कहते कहते जेड़ा असली हुंदा ना अपने आप ਨੂੰ हमेशा लुको के रखदा हैगा. One of the best ways to escape from such problem is to remain in disguise and to do one sadhana. कहते there are many mystics who are really great in their actual life but pretend to be imbalanced so that they are not disturbed. कहते इस तरह के बहुत पहुंचे हुए हैं जो इतना ऊपर पहुंचे हुए हैं पर वो प्रिटेंड करेंगे भाई इम्बैलेंस है ताकि लोग उनको तंग ना करें. वो अपनी असली जो शक्तियां हैं जो उन्होंने पाया है उसको कभी भी वो एग्जिबिटर डिस्प्ले नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग. देयर सोल पर्पस इज टू दैट बी कनेक्टेड एंड बी इमर्स्ड इन लव ऑफ ऑलमाइटी. I know of one instance where people kept bringing food and money to a Swami. He did not want them to do this because they kept disturbing him. So he made a sign which said, anybody who loves me will bring only a pebble. कहते मैं एक ऐसे स्वामी को जानता हूँ उसको लोग कभी खाने से भोजन ले आते थे, पैसे ले आते थे, इतना डिस्टर्ब करते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो उन्होंने लिख के ही लगा दिया एक बोर्ड पे कि भाई anybody who loves me will bring only a pebble. एक छोटा सा कंकर मेरे लिए लेके आए. People concluded that the Swami loved pebbles and each day many people would bring him pebbles. 1 pebble, 2 pebbles, 3 pebbles. They collected pebbles from the road according to their whims. After some time there was a veritable mount of pebbles and the Swami lived on the top of that. देखो वो जो लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने तो उनका नाम भी डाल दिया होना कंकर वाले बाबा जी, ये तो भी कंकर मांग रहे हैं, नॉट नोइंग कि उनका असली पर्पस क्या था. वो धीरे धीरे कंकर से वो ढेरी बनते बनते एक हीप बन गया और स्वामी जी उसके ऊपर बैठ गए. The people started calling him Kankariya Baba, which means the Swami of pebbles. This helped him to remain aloof. चलो वो इतनी ऊपर बैठ गए तो थोड़ा सा तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया ना लोगों से. Then the Swami started to speak a language which nobody understood. If anybody came to see him, he would say do 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 do. तो स्वामी जी ने दूसरा उपाय किया कि चलो मैं इस तरह की कोई मम्बो जम्बो लैंग्वेज बोल देता हूँ, they won't understand, so it will keep me at distance from people. He did the same thing to me. So I went to him at night when he was all alone and he explained, since people disturb me, मुझे लोग तंग करते हैं, I have learned a new language and no one can converse with me. कहते this Swami taught me to always remain in such a way as not to allow the people of the world to disturb me. A human being has many personalities because the ego has many faces. कहते इंसान की बहुत पर्सनालिटीज हैं क्योंकि जो घमंड है, जो ईगो है, जो प्राइड है, इसके भी तो बहुत चेहरे हैं ना. कहते some of them we can detect and analyze, but many remain unknown to us. The Swami concluded that the world actually worships the ego in the name of God. Okay, कहते when the lower ego is made aware of that self-existence reality which stands behind it, then it starts turning inwards. कहते जो लोअर ईगो है ना, जब उसको अवेयर कर दिया जाता है, वो जो रियलिटी है जो उसके पीछे है, फिर वो अंदर की ओर जाने लगती है और ये ईगो आगे जाके क्या बन जाती है, हायर ईगो. कहते ये वाली ईगो तो फिर भी हेल्पफुल है ना, बट लोअर ईगो मेक्स वन मिजरेबल. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज temptations on the path. So इस चैप्टर से यही सीखा है जो असली स्वामी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें क्या लेना देना फेम से. चलो ठीक है, कोई आए भोजन रख जाए, ठीक है, पर वो इस तरह से इतनी संगत बढ़ती रहती है, इतने उनके डिसाइपल्स बढ़ते हैं बिकॉज हरि को अपने जवाब चाहिए. तो वो कहते हैं फिर हम भक्ति कब करें. हम जिस पर्पस के लिए भागे थे या जिस पर्पस के लिए हमने रिनाउंसिएशन वाला पाथ हमने चूज किया, तो कहते फिर उन्होंने इस तरह के उपाय करते, वो शो ही नहीं करते दैट दे आर इनलाइटेंड बिकॉज दे रियली डोंट वांट दैट क्राउड एंड ऑल दैट. टेम्पटेशंस ऑन द पाथ. Swami ji कहते हैं, I went to a Swami who told me the following story to teach me about temptation on the path of self-realization. कोई temptation की अब story बताने जा रहे हैं. A young man took vows of renunciation and became a Swami. His master told him to avoid 3 things. कहते एक young आदमी था, वो उसने जो भी अपनी ओथ उठाई, कसमें उठाई renunciation के लिए, जो भी इनका होता है प्रोटोकॉल, कहते उनके मास्टर ने कहा था 3 चीजों को अवॉइड करना. वो क्या है? गोल्ड, सोना, विमेन, एक औरत, and fame, प्रसिद्धि. Okay, one day the Swami was crossing a river and noticed that part of the river bank had been washed away. Then he saw that some big jars full of gold coins
had been uncovered, he thought, I don't need it because I have renounced the world. But if I build a temple, that will be good. That will be good. तो उनको जो भी जार्स में गोल्ड कॉइन मिले ना, अनकवर्ड थे. तो हो सकता है ये भी उनका कोई टेस्ट हो. कहते चलो मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं है, पर जो मंदिर बनेगा ना उसके लिए अच्छा होगा. So he went to some builders, showed them what he had found, and asked them to build the temple. They said to one another, उन builders ने एक दूसरे को क्या किया, उनमें लालच आ गया. कहते why should a Swami have so much money? Let's throw him in the river and distribute the money amongst ourselves. वो बिल्डर्स ने सोचा चलो जी स्वामी को क्या करना भी इन कॉइन से, चलो इनको तो हम धक्का दे देते हैं नदी में और ये सब जो भी गोल्ड कॉइन्स है हम बटोर लेंगे. Okay, he was almost drowned, but by the grace of God, he was able to save himself. He thereupon determined with finality, no matter what happens, no money. Because he learned his lesson. कहते जो मर्जी हो जाए पैसे का नाम नहीं लेना. He went far into the woods. जंगल की ओर गए. When anybody came to see him, he said, stop there, please. If you have any money, put it aside before you came closer. So before you come closer. तो वो स्वामी जी के जैसे कहते हैं once bitten twice shy. He had his lesson. तो वो कहते अगर किसी के पास पैसा है ना पहले तो उसको साइड पे रखना भी फिर मेरे पास आना. क्या होता है आगे? A woman came and he ordered, don't come near me. She said, sir, I will only leave food here every day and go away. But each day she came slightly closer to him. The Swami had confidence that she was a good person. He thought, she really wants to look after me and wants me to enlighten her. देखो हमने पहले पढ़ा है ना कि उनके मास्टर ने एक तो गोल्ड का कहा था, एक विमेन ऑफ फेम. गोल्ड का तो हमने देख लिया कि गोल्ड जब उठाया, हालांकि अपने लिए नहीं उठाया था, मंदिर के लिए, पर फिर भी उनको रिवर में धक्का दे दिया गया और ईश्वर की कृपा से बचे. अब विमेन का हम पढ़ते हैं. This okay, but each day she came slightly closer to him. The Swami had confidence that she was a good person. He thought she really wants to look after me and wants me to enlighten her. One day she brought a cat to keep him company. तो एक बिल्ली ले आई ताकि उनको कंपनी मिल सके. But the cat would not eat the food which had been prepared for the Swami. He requested, तो उन्होंने औरत को बोला, I need some milk for the cat each day. तो वो अब दूध के लिए क्या किया उसने, औरत ने वो एक काऊ ले आई. He asked, who will look after this cow? She asked, may I look after it? And he agreed. She looked after the Swami more and more. Eventually they began to live together and the woman bore him a child. तो जैसे भी उसकी नजदीकियां उनके साथ हो गई उस औरत के साथ, तो बच्चा हो गया. And one day the Swami was taking care of the child when another Swami came along and said, what has happened to you? The Swami began to weep. When he realized how much he had again become entangled within the world. वो कहाँ दुनिया से भागने को आए थे और कहाँ फिर उस गुंजलों में he got entangled. He left and went even deeper into the forest. कहते और दूर चले गए forest में. He practiced very sincerely and after some years acquired some siddhis. Powers मिल गई उनको. कहते one day a man from nearby village sought him out. He bowed and said, Swamiji, you are so kind and such a great sage. I'm very poor. My children do not have enough to eat. Please help me. स्वामी जी कहते तो एक आदमी उनके पास कहते मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों के पास तो खाने को नहीं है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए. अब स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी said, okay, take one hair from my beard, put it in your cupboard and tomorrow your cupboard will be full of money, but don't tell anyone about it. उन्हें बोला जो मेरी दाढ़ी है ना इसका एक बाल ले जाओ, इसको तोड़ के चलो आप अपनी कबर्ड पे रखो, तो तुम देखना your cupboard's gonna shower money. I mean it's gonna be full of money, but don't tell anyone about it. When he returned to his home, that man naturally revealed the secret to his wife and she to many others. Soon the news had traveled far and wide. उन्होंने उसको बोला था किसी को मत बताना, पर आके उन्होंने अपनी पत्नी को बोला तो पत्नी से नहीं रहा गया, तो हर जगह सबको खबर होगी. कहते hundreds of people thronged to the Swami to pull a hair from his beard. तो वो बाल के लालच में सब आते रहे क्योंकि सबको पैसा चाहिए था. Oh my God, so Swamiji's face was so sore it started bleeding. Once again he had to go away and begin his practice anew. देखो गोल्ड का भी हमने देख लिया, विमेन का भी देख लिया, फेम का भी देख लिया, तीनों का उन्होंने स्वाद चख लिया. He now once again he had to go and begin his practice anew, but he had learned a valuable lesson. He now knew the consequences of becoming involved with gold, women and fame. The Swami who told this story to me said, this is a lesson which you should never forget. Let this story be a lesson to you and relate to all the young Swamis whom you meet on the path.
क्योंकि वो अपना उस ग्रस्त में दोबारा से नहीं पड़ना चाहते थे ना। जब उनके बेबी भी बच्चा भी हो जाता है, उनको लगता मैं तो उसी चीज में फिर दोबारा से जा रहा हूँ जिससे मैं दूर भागा हूँ। प्रसिद्धि भी उनको मिल गई, गोल्ड कॉइन से भी उनका क्या हर्ष हुआ, बट नेवरदलेस ही लर्नड द लेसन, मे बी द हार्ड वे, बट इवेंचुअली ही लर्न द लेसन। इसी तरह होता है लाइफ के, हम ठोकरों से लेसन से ही सीखते हैं। और कहते हैं ना, बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी ठोकरों से आती है। तो कई बारी जिंदगी की जो ठोकरें होती हैं ना, वो हमें बहुत सिखा देती हैं। और they enlighten us more than the bookish knowledge, the first time experience. That is why जब हम सत्संग भी करते हैं, हमारी कोशिश होती है जो हमने गलतियां की हैं कोई और ना करे, what we have suffered. Because मैं हमेशा अपना बताती हूँ कि I used to be really really gullible, and if people would take Guruji's name, or कुछ इस तरह सा साइन मुझे मिल जाए, तो I would believe them like anything. But now I'm vigilant, now I'm alert कि no, ये ऐसे ही होता है पाथ, इसमें भी आपको बहुत अलर्ट रहना होता है। जैसे हमें पीछे हमने एक पढ़ी थी ना कि स्वान जो होता है, उसको जब मिक्सचर दिया जाता है दूध और पानी का, स्वान में भगवान ने वो शक्ति डाली है, वो उस मिक्सचर में दूध को अलग कर सकती है। इसी दुनिया में बुरा और अच्छा भी होता है, ना इट्स अप टू अस, हमने कितना अच्छाई उठानी है। देखो, अच्छाई और बुराई हर जगह मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी। तो हर एक पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, वी गॉट टू बी लिटिल अलर्ट एंड विजिलेंट, एंड ऑब्वियसली गुरु जी से कृपा मांगनी है, बिकॉज पीपल टेक हिज नेम एंड समटाइम्स दे फूल पीपल। सो दैट दिस, दो आई नो दिस थिंग इज अटरली रॉन्ग, तो इन चीजों से बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज स्वामी जी कहते हैं, शुड आई गेट मैरिड? तो फाइनली स्वामी जी के भी मन में शायद कभी शादी का विचार आया हो। ओके, Swami ji कहते हैं, when I was in Uttar Pradesh, a northern state of India, people would come to visit me in the evenings and I would give discourses on the Upanishads. One day, a girl who had her master's degree in English literature asked me to grant her an interview. She began by asserting that I had been her spouse in a previous life. तो वो एक औरत उनके पास आई जिसकी मास्टर्स डिग्री थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो इंटरव्यू लेने आई, तो इस तरह से उसने असर्ट कर दिया बड़ा फॉर्मली कि भाई आप तो पिछले जन्म में मेरे पति थे। कहते she talked for 2 hours and led me to a state where I agreed that it could have been possible. अब देखिए, स्वामी जी का भी थोड़ा जैसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश हो गया। स्वामी जी कहते मुझे तो सच में लगने लग गया कि बिल्कुल ठीक कह रही है और ऐसा हो सकता है। I had never had such a personal audience with anyone for such a long time before. She tried to persuade me that we should get married in this life as well. तो उसने बोला भी पिछले जन्म में भी आप मेरे पति थे, how it's a good idea if we get married and we tie the nuptial knot in this life as well. Later I talked with her mother, who also supported her imagination. What the girl said was so enticing. Swami ji कहते इतना luring था, इतना enticing था, that I was so naive that I started brooding on what it would be like to live with her. तो स्वामी जी भी उसकी बातों में आगे कहते मेरे को तो बस I got lured, I got captivated by her sugar coated talk, कि मैं सोचने लग गया कि भी ऐसा कैसा होगा जब मैं इसके साथ रहने लगूंगा. I told her that if my master would permit me to get married, it was all right with me. This was the only time in my life when I considered living with someone, though I was not considering living my spiritual path. स्वामी जी कहते कि ऐसा वक्त था जब सच में मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं रह सकता हूं किसी के साथ, पर yes, I would not leave my spiritual path. कहते this girl, maybe probably I think this girl must be having gift of the gap, because स्वामी जी की जैसी नेचर थी stubborn और इतने obstinate, और उनको उस बातों में अपने लगा लेना, so she must be quite she must be a smooth talker. Okay, कहते हाँ, पर मैंने स्पिरिचुअल पाथ नहीं छोड़ना था. स्वामी जी कहते दिस गर्ल वाज फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली. Many of her brothers, cousins, and other relatives held high government positions. They pressed me to marry her. For 1 year, I was strongly influenced by. For 1 year, I was strongly influenced by my emotions. It was a bad period. Obviously, ऐसा होता ही है. तो स्वामी जी भी कहते एक साल तक तो मैं इतना, मेरा इमोशंस के साथ मतलब खिलवाड़ हुआ या जो भी है, मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था इमोशंस के अंदर आके, तो इट वाज अ बैड पीरियड. तो स्वामी जी ऑल्सो हैड द टेस्ट ऑफ
you know, how it feels to be fall in love with someone, because Swamiji felt so influenced by the emotions. I felt frustrated and unfulfilled, but I was very much influenced by the girl and her family and did not know what to do. क्योंकि she was from a really really affluent family. तो स्वामी जी कहते हैं उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या करता. The experience helped me to see how a student on the path of spirituality who is committed to the path of renunciation can be disturbed and distracted. देखो ये path ऐसा ही है, ये नहीं है कि जो हमें स्वामी जी कहीं नजर आते हैं, कोई भी जैसे स्वामीज हो, शायद वो पता नहीं किन किन चीजों से निकले हो, कितनी टेम्पटेशन से निकले हो, कहाँ कहाँ से गुजरे हो, उनके और भी टेस्ट और भी टफ होते जाते हैं, फिर जाके कभी कोई उस पोजीशन पे पहुंच पाते हैं. कहते पर इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखा दिया कि ठीक है, ये पाथ जो है ना, इसमें बार बार डिस्टर्बेंस भी आएगी, डिस्ट्रैक्शंस भी आएगी, डेविएशंस भी आएंगी, डाइग्रेशंस भी आएंगी. तो फिर भी eventually it shines your soul. कहते many obstacles appear on the path, but I'm convinced that the grace of the master and the grace of God lead to student to overcome these obstructions. ऐसे ही होता है गुरु जी के साथ भी, जब स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं ना, अगर आप जुड़े रहोगे ना, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में भी क्या क्या होने वाला है. बड़ी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ आता है, कहते हैं ना गुरु जी का लड़ मत छोड़ो. उस टाइम बहुत कुछ ऐसा होने लग जाता है. कई बार बंदा सोचता है कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम जस्ट गेटिंग लॉस्ट विद इमोशंस एंड एवरीथिंग एंड ऑल. बट वो ही है ना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं. कहते फाइनली आई वेंट टू माय मास्टर एंड excuse me, finally I went to my master and left the decision with him. He never controlled my life. उनके मास्टर ने तो कभी शुरू से उनकी लाइफ कंट्रोल नहीं की थी, but would advise me when I needed it. After some resistance and discussion, I always ended up following his advice. My master said, you have a task and you have not yet completed it. Having examined and compared worldly companionship and spiritual attainments and deciding to follow the path of renunciation, you are now letting yourself be tempted back into the world. कहते देखो, अगर तुम ये चाहते हो मुझे वर्ल्डली कंपेनियनशिप चाहिए, तो फिर वो पाथ नहीं ना हुआ. तुम बार बार टेम्पटेशंस तुम्हें वर्ल्ड की अपनी तरफ खींचती हैं. कहते इफ यू persist and remain within the influence of your current atmosphere, it will take several lifetimes for you to come back to the path. देखो, हमें पता है कि स्वामी जी ने जन्म दोबारा से क्यों लिया था. उनके आने से पहले ही उनके जो बंगाली बाबा जी, ये जो गुरु जी हैं, उनके माता पिता को कह दिया था, हालांकि उनकी उस एज बहुत थी, मेरा ख्याल फादर की शायद 63 ऐसे कुछ थी ना, मदर 40s में थे, कि नहीं आपके बच्चा होगा. और उनको माध्यम चुना. और स्वामी जी को बचपन में याद था कि भी मैंने क्यों जन्म लिया. और कहते अगर देखो तुमने जन्म उसके लिए लिया, तुम फिर उस चीज में भटक रहे हो, टेम्पटेशंस में आ रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें सेवरल लाइफ टाइम्स लगेंगी दोबारा से इस पाथ में आने को. कहते द डिसीजन वाज लेफ्ट टू मी. फिर भी स्वामी उनके गुरुदेवा ने थोपा नहीं, गाइड जरूर किया, एडवाइस किया, but he just left the decision to him. But after listening to my master, I decided to break this tie and go back to the path of renunciation. पर स्वामी जी ने वो सारी, कहते हैं ना, वो अपना उन्होंने सोचा कि नहीं, ये path of renunciation ही मेरे लिए है. He just broke the ties of the worldly, things. There are two well-known paths. कहते दो पाथ हैं भाई, एक path of renunciation है और and the path of action in the world. कहते my path was a path of renunciation. One should not compare paths and think one superior and the other inferior. स्वामी जी कहते देखो, एक दुनियावी पाथ भी है, रिनाउंसिएशन का भी. कंपैरिजन करना बहुत गलत होगा कि कहीं भी ये ऊपर है वो नीचे है. कहते I certainly do not condemn the path which involves living and working in the world while having a family. That path furnishes the mean of living, but is also time consuming. In the path of renunciation, there is ample time for spiritual practices, but limited means of like food, shelter, and clothing. वो तो है, ये renunciation path में आपको उस तरह से ना खाना मिलेगा, ना shelter, ना clothing मिलेगी, because it's really, really tough. The renunciate must depend on the householder for fulfilling such needs. कई बारी तभी तो फिर renunciate भिक्षा मांगने आते हैं, और हमें भी किसी को जज नहीं करना. कभी हम भी ऐसे मन में आ जाता है, ये तो हट्टा कट्टा आदमी है, ये ऐसा क्यों कर रहा है. पर गुरु जी खुद कहते सी आजकल पखंड बहुत वध गया ना, इस करके पता नहीं चलता असली कौन हैगा.
इसलिए कि गुरुजी ने यह भी कहना ताड़े घर ही सब कुछ हैगा, पर एट द सेम टाइम गुरुजी आल्सो सेड ताड़े कोई गेट ते आ जाए कुछ नहीं दे सकते ना दो हाथ जोड़ दिया करो, तानू नहीं पता कौन केड़ा किस रूप च आया हैगा. So what we have learned is we should not judge anyone. I understand there is so much of hypocrisy, there are so many fake gurus. So for a normal human being, for a layman, it becomes very difficult, but at the most we can just fold our hands if we don't intend to give anything. Okay. कहते हैं उसके बाद what is important. Okay, the renunciate must depend on the householder for fulfilling such needs. It's not important which path one follows. What is important? कहते कोई भी path आप follow कर लो, मतलब कौन सा path follow करते वो important नहीं है. important क्या है? Honesty, sincerity, truthfulness and faithfulness which one has in either path. ये तो बिल्कुल सही. आप कुछ भी करो, चाहे आप दुनियावी जीवन जियो, चाहे गृहस्थ आश्रम का, कुछ भी आप उसको सच्चाई से, सिंसेरिटी से, ट्रुथफुलनेस से, फेथफुलनेस से आप उस पे चलें. कहते हैं this particular incident brought some humiliation into my life because people put swamis and yogis on such high pedestals and look upon them as demigods. In India, a swami is expected to live apart from society, without worldly possessions and without any worldly preoccupations. कहते I have met many on the path who live hypocritically because of such expectations. वो तो है ही है. कहते मैं अपने पाथ पे ऐसे मिला हूँ जो सच में हिपोक्रेट ही होते हैं, पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी उनसे होती है, लोग उनको इतना ऊपर उठा देते हैं. कहते I've heard Western psychologists say that renunciation and especially celibacy and ascetic insanity I leave it to each individual to choose for himself, but it's important to mention here that hypocrisy is a great obstacle. वो तो है ही है ना, बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हो, अंदर से कुछ और दिखा रहे हो, वो तो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है. कहते हैं those who observe celibacy do in, जैसे ब्रह्मचारी कहते हैं, those who observe celibacy do indeed become abnormal if they do not transform their inner personalities. देखो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो हर चीजों में, तो कहते हैं अगर आपने उस चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं किया चेंज करने में या किसी और चीज में, तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम abnormal. Those who do not have control over the primitive urges should not follow the path of renunciation. The drives for food, sex, sleep, and self-preservation are powerful urges. Each has a very strong impact and influence on human life, on behavior. Why should there be such a taboo on sex only? In yoga science, all the urges are channeled and direct towards spiritual development. देखो जो भी इंसान की जो अर्जीज हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि आप सिर्फ सेक्स को ही टैबू क्यों मान के चलते हो. कहते जितनी भी अर्जीज है ना, योगा में सिखाते हैं उनको कैसे अच्छी तरह चैनल करना है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए. कहते those who cannot control and sublimate these drives should live in the world and experience their fulfillment in a regulated way. कहते they can follow the path of tantra rather than renunciation. They can transform the fulfillment of these drives into spiritual experiences. कहते there is much confusion created by renunciates who impose rigid discipline on their students. बिल्कुल है, जो renunciate होते हैं ना, अगर rigid discipline डालेंगे ना students पे तो क्या होगा, students obviously डिसऑनेस्ट हो जाएगा, हिपोक्रिटिकल हो जाएगा. अब देखो इनके स्वामी जी ने, जो इनके मास्टर्स है गुरुदेवा, उन्होंने कभी भी कोई, he was not a rigid guru, he was very liberal. He wanted Swami to have to taste everything in life and eventually he left everything to him. अगर वो फोर्स करते तो स्वामी जी वो ना बने होते जो स्वामी जी हैं, the biggest Swami of his time. कहते this often makes students dishonest and hypocritical. In such discipline is such discipline necessary? Conflict within and without are the signs and symptoms which clearly indicate that one is not on the path of spirituality. बिल्कुल है, ताई तो गुरुजी कहते हर चीज का बैलेंस बना के चलो. गुरुजी ने कभी भी कोई चीज फोर्स नहीं की हैगी है, कभी तो वो रसक विरागी गुरु बन के आए कि दुनिया के रस को मानते हुए भी जो अंदर आपका विराग है ना वो होना चाहिए. दुनिया च रह के होते ऊपर रहना सीखो. आई थिंक दैट इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. हमें तो उस तरह से गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि छड़ दो, भक्ति इदा करो, पुट्ठे लटको, अच्छा इदा करो, इन्ने बजे ही करो. He said, कोई every second becomes Amrit Vela with him, and पूरे जीवन को ही सत्संग बनाना चाहिए. सिर्फ संगत में बैठ के ही नहीं अपने आप को हमने पायस और अच्छा दिखाना, हमने वैसे भी अपने आप को अच्छा रखना है. that is what matters. तो हमने देखा कि देखो ये जो स्वामीज और renunciate होते हैं,
इनका जीवन रेजर एज पे चलने वाला होता है। ये नहीं है कि इनके लिए पल पल ईश्वर इनकी भक्ति चेक करने के लिए टेम्पटेशंस लाते हैं। बहुत कुछ होता है, फिर जाके जो होता है ना, डटा रहता है कि नहीं, मैंने इस बात को नहीं छोड़ना। जैसे स्वामी जी ने अपनी एक एक चीज इतनी ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। He didn't hide anything, be it was about getting married, जो थोड़ी देर के लिए उनके thought आया, because he got enamored by that talk of that woman, who really made him believe that yes, you were my spouse in the previous janam, and why don't we get married in this janam as well? और इस तरह से स्वामी जी ने हर तरह की, चाहे पैसे की टेम्पटेशन और स्वामी जी को कपड़े पहनने का भी, he liked wearing snazzy clothes and attires, and he went to university as well. And then he himself would go to the market and test the fabric, and he would, मतलब जो भी है, उन्होंने हर तरह के रंग माने, पर अंत में उन्होंने यही सोचा, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस पाथ नो मैटर व्हाट कम व्हाट मे। नेक्स्ट है, स्पिरिचुअल डिग्निटी इज ऑल्सो वेनिटी। कि स्वामी जी कहते हैं, after I had renewed my resolve to follow the path of renunciation, my master thought I was feeling guilty. So he told me to live on the bank of the Namrada river, which flows to central India, and to practice certain austerities there. He instructed me to go to an isolated dense forest 30 miles south of Karighat near Omkareshwar. The river there was full of crocodiles. तो स्वामी जी को जहां उनके मास्टर ने भेजा, कहते वो नदी तो बस मगरमच्छ से पूरी तरह भरी हुई थी। And in the mornings and evenings, several of them would lie on the sand along the river. I lived on the river bank for 6 months without anyone disturbing me. वो तो है ये ना, हमें पहले भी लेसन में पढ़ा, वो क्रिएचर्स देख लेते हैं, आपकी भावना देख लेते हैं, डर की है या वायलेंट नेचर है, कहते उन्होंने तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अब स्वामी जी के पास क्या था? कहते I had only a water pot, blanket, and 2 loincloths. People from a village 6 miles distant supplied me with milk and whole wheat bread once a day. Those 6 months of intense physical and mental austerities were high period of life. तो हम सोच सकते हैं किस तरह की स्वामी जी की तपस्या रही होगी। 6 महीने इंटेंस फिजिकल, रिगरस फिजिकल, मेंटल ऑस्टेरिटीज, कहते सबसे हाई पीरियड था मेरी लाइफ का। कहते one day a party of big game hunters came by and saw me sitting in meditation on the sand of midst of many crocodiles, some of who were lying just a few yards away from me. तो उस तरह के जो कोई हंटर्स आए होंगे, उन्होंने देखा भी ये कौन है, इसके पास तो मगरमच्छ भी हो, ये बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी फोटोग्राफ ले ली। The hunters took my photograph without my noticing and sent it to a newspaper. Soon stories about me appeared in many newspapers, and at that time, कहते जो शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य of Karvirpitham was searching for his successor. Shankara established 4 institutions in different sections of India, and 5th institutions at a place where he spent his last days. The heads of these institutions are considered to be the spiritual heads of India and occupy positions analogous to that of Pope in the Christian tradition. He instructed a few pandits to observe my daily routine from a distance. वो जो शंकराचार्य ट्रेडिशन के थे ना, तो उन्होंने देखा अब हमें वही कोई सक्सेसर तो चाहिए, उनके विचार आया होगा क्यों ना हम इनको बना ले। तो उन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई, वुड कीप एट विजिल, पूरी इनकी एक्टिविटीज को देखने के लिए। They also collected information from others about my life. After observing me for some time and carefully investigating my background, they approached me and tried to persuade me to consider becoming Shankaracharya. कहते नहीं, स्वामी जी को बिल्कुल उन्होंने persuade कर दिया, आप शंकराचार्य बनेंगे। कहते at that time the Shankaracharya was Dr. Kutkoti, a highly intellectual man and a Sanskrit scholar of high repute. He was a close friend of Tilak, an Indian leader and author of Gita Rahasya. I was taken to Dr. Kurkoti and he took a liking to me. तो डॉक्टर कुरकोटी को तो पसंद आ गए स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी का तो वो persona ही ऐसा था. Then I went to my master and received his permission to accept the position. तो मास्टर के पास के एक्सेप्ट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है मास्टर ने कुछ नहीं कहा होगा, because he again wanted him to experience it directly. After a ceremony lasting 18 days, I was installed as a successor of Jagat Guru Shankaracharya. तो देखो स्वामी रामा जी क्या बन गए, जगत गुरु शंकराचार्य. I received thousands of telegrams from well-wishers all over the world, including messages from the Pope and other spiritual heads. It was a strange experience for me, such a startling contrast to my 6 months of solitude and silence. I was less than 30 years old and they gave me such a great responsibility.
इतनी यंग एज में, लेट 20s में होंगे, तो उनको इतना बड़ा गुरु और इतना बड़ा ओहदा दे दिया। कहते हैं जो मेरी पहले लाइफ थी, कहाँ मैंने इतनी घोर तपस्या 6 महीने की कि अकेला रहा, साइलेंस में रहा, कहाँ अब मेरी लाइफ क्या होने वाली है। कहते हैं Dr. Kurkuri believed in social religious reformation and handed over his files of valuable correspondence with other spiritual and political leaders. I had numerous meetings with various groups and leaders. I had a busy schedule of traveling and lecturing, and when I wasn't so engaged, people would come to see me from morning to evening and ask for my blessings. It became very difficult for me. I had no freedom. I thought, I don't get any time to meditate and do my practices. I spent my whole day blessing people. This is not good. I was not at all happy. My conscience said, you are not meant for this. Leave. उनकी जो सबकॉन्शियस ने आवाज दी ना, कहते ना इन्ना भी रब बिजी ना करे कि बंदा रब ਨੂੰ ਹੀ भूल जाए। कहते उनकी अंदर की आवाज ने कहा भी चल बस बहुत हो गया, आप निकल यहाँ से, लीव। सो आफ्टर 2 years I simply ran away without any money in my pocket। स्वामी रामा जी कहते मैं फिर मुझे भागना पड़ा और मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं था। One day I had a large mansion to live in। कहा मेरे को इतना बड़ा पैलेशियल एक मेंशन और ये इतना महलों जैसा मुझे रहने को मिला। एंड मेनी कार्स फॉर वन मैन टू राइड इन, एंड द नेक्स्ट डे नथिंग बट द क्लोथ्स आई वाज वेयरिंग। स्वामी जी अपनी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं ना, कहते देखो इतनी कारें, इतनी शान शौकत, इतना फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, और अब मेरे पास सिर्फ कपड़े थे मेरे जो मैंने पहने हुए थे। Wanting to return to Himalayas, I boarded the third class section of a train which was headed where I wanted to go, even though I had no ticket। स्वामी जी कहते मुझे थर्ड क्लास सेक्शन में बैठना पड़ा, मेरे पास तो टिकट भी नहीं थी। द पीपल ऑन द ट्रेन मस्ट हैव वंडर्ड whose clothes I had stolen, because स्वामी जी was wearing वो बड़े फ्लैम्बॉयंट से अच्छे से कपड़े, स्नैजी कपड़े पहने हुए थे। तो कहते लोगों ने तो सोचा ना भी किसके कपड़े चुरा के ये भाग रहे हैं। Because I was still wearing the costly garb of Shankaracharya। When the conductor came, he forced me to get off at the next station because I had no money, and I didn't want to reveal my identity। कहते I had never before committed such a crime as traveling without a ticket। कहते स्वामी जी कहते मतलब अब से पहले मैंने कभी भी टिकट के बगैर कभी भी मैं ट्रेवल नहीं किया। I just bowed my head and got down saying humbly, thank you for not prosecuting me। The admirers and followers of Shankaracharya did not at all appreciate my resigning the dignity and prestige of the position। They felt that I was forsaking my responsibilities, but I had not been happy and I never returned to that place again। कहते मैं दोबारा से कभी नहीं आया, चाहे उनके फॉलोअर्स ने सोचा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं ठीक किया। कहते when I came to my master, he said, you have seen how worldly temptations follow us, स्वामी। अब तुमने देखा कि स्वामी के पीछे पीछे टेम्पटेशंस कैसे भागती हैं। How the world wants to absorb a spiritual person। Now nothing will affect you because you have experience। तेरे को तुम्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया, positions का, institutions का, and renunciation का। कहते people expect a lot from the spiritual leaders। Do what you can to uplift and enlighten the people, but never forget your path। कहते ठीक है, अपना लोगों को अपलिफ्ट भी करो, इनलाइटन भी करो, पर अगर किसी का पाथ उस तरह कहता है उससे आप नहीं भटको। तो हमारा पाथ जैसे गुरु जी ने बहुत सौखा बनाया हुआ है, बट इट इज ऑल्सो लाइक वॉकिंग द रेजर्स एज, बिकॉज इसमें भी बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत कुछ आता है। यू नो लाइफ थ्रोज एट यू so many different things, but then we have to pass the test gracefully, and that only happens with his grace, with his gracious grace। पर हाँ, हमें उस तरह से चीजें नहीं करनी पड़ी जो एक साधु महात्मा जो हिमालयस में रहते हैं, इतनी घोर तपस्या और क्या क्या उनको छोड़ना पड़ता है। और उनके लिए तो, क्योंकि हम तो वर्ल्ड में रहते हैं ना, वी आर यूज्ड टू ऑफ दीस थिंग, उनके लिए तो और मुश्किल है। कितनी टेम्पटेशंस आके और स्वामी जी ने तो खैर हर चीज एक्सपीरियंस करके छोड़ दी। एंड देन इवेंचुअली जो उनके अंदर की आवाज थी वो हमेशा जगी रही कि नहीं, दिस पाथ इज नॉट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज अ मिजरेबल एक्सपेरिमेंट। कहते a man who knew me used to cut lawns, collect the grass, and sell it for the cows and buffaloes to eat। कहते this is how he earned his living, but he thought Swami Rama enjoys his life without doing anything। तो एक आदमी ने सोचा जिसको बहुत काम करने पड़ते थे ना, कि स्वामी रामा जी को तो बहुत एंजॉय करना पड़ता है लाइफ में, मतलब उनको ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता। Whenever he goes, people bring flowers, spread carpets, and even give him a cottage to live in। People clean and cook for him and take care of all his needs। It must be very good to be a Swami। तो उसको लगा भी स्वामी बनना तो बड़ा ही आसान है।
लोग आपको खाना भी दे जाते हैं, आपका ध्यान भी रखते हैं, आपके लिए कॉटेज का रहने का अरेंजमेंट, आपके लिए सफाई भी हो जाए, सब प्रबंध हो जाते हैं। तो उसने अपनी वाइफ को क्या क्या कहा उस आदमी ने? He said to his wife, I propose to do an experiment, okay? For 6 months, I'll pretend to be a swami. तो कहते मैं ना 6 महीने देखूंगा अभी स्वामी बनना क्या होता है, ताकि मेरी भी ऐसी सेवा हो। शी कंप्लेन, बट आई नीड मनी। उसने कहा मुझे पैसा तो चाहिए। कहते कोई बात नहीं, यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली। ही रिप्लाइड, व्हाट एवर मनी पीपल गिव मी ना, आई विल टर्न ओवर टू यू। जो भी मुझे लोग दान करेंगे ना, मैं तेरे को दे दूंगा। ही सेव्ड अ लिटिल मनी, bought the proper clothes, and pretended to be a swami. Okay, the first 3 days nobody asked him if he was hungry. 3 दिन तो किसी ने उसको पूछा भी नहीं तुम्हें कुछ खाना चाहिए, भूख लगी है। He felt insulted because he saw that many people were coming to me and putting food before me, although I was not eating it. तो उस आदमी ने देखा ना कि स्वामी जी के पास तो सब कुछ आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, चाहे स्वामी जी खा नहीं रहे थे क्योंकि स्वामी जी हमेशा बांट देते थे ना हरि को। तो कहता मेरे पास तो कोई आ नहीं रहा। He felt insulted because he saw that many people were coming to me and putting food before me, although I was not eating it. If people bring me anything, I pass it on. In this way, I'm free from any obligation. They are expressing their love by giving it to me, and I'm expressing my love by giving it to someone else. After 7 days, he had lost a great deal of weight and had yet to make any money. कहते 7 दिन के बाद तो उसका काफी भार कम हो गया ना, कुछ खाया पिया तो था नहीं ढंग से, और पैसा भी नहीं कुछ बना उससे। At night, he would quietly visit his wife. She said, what a foolish man you are. You were earning quite a lot of money and now you're not earning anything. तो वाइफ कहती है इससे तो तुम पहले से थे, पैसा तो कमा रहे थे ना, अभी तो you're not earning anything. Why don't you at least go to Swamiji and ask him the secret of his success? कहते हैं स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी रामा जी के पास पूछो कि उनको सक्सेस कैसे मिली है, उनको कैसे लोग इतना ध्यान देते हैं और सेवा करते हैं। So he came to me in the garb of a Swami. I said, Swamiji, please come forward. He said, sir, I want to ask you a question privately. So I asked the others present to please wait outside. He said, I want to know the secret of your success. Swamiji कहते, I said, I am not aware that I'm successful. स्वामी जी कहते मेरा इन चीजों में ध्यान थोड़ी है, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो। In what way do you think I'm successful? He said, without asking for money, you get money. This cottage is at your disposal. Drivers come for you. Many people come and sit with you. Why? I replied, you know. स्वामी जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कहते तुम्हें पता है क्या है ये, क्या कैसे हुआ? कहते when I wanted such things ना, जब मुझे इन चीजों की लालसा थी, they never came to me, कभी भी मेरे पास नहीं आई। कहते but the day I determined I didn't want them, I began getting them. पर कहते जब मेरा मन ऐसा बन गया मुझे इन चीजों का क्या करना, ये मुझे नहीं चाहिए, कहते उस दिन से ये चीजें मुझे अपने आप मिलने लगी। Remembered this. तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का कोट बोल रहे हैं, कहते remember this as Swami Vivekanand says, fortune is like a flirt. It's really beautiful. Fortune is like a flirt. She will run away from you when you want her. कहते but if you're not interested in her, she will come chasing you. तो यही है, किसी चीज को चेज नहीं करना। if you run after some things, they're gonna run, keep on running, they're just going to be at distance from you. But the day you stop, you don't know when you're gonna come okay, the day you stop, you don't know how these things gonna chase you actually. तो किसी चीज की जो लालसा होती है, जितना जितना हम भागेंगे उतनी हमसे दूर जाती है। जब हम उन चीजों का हमें इतना मोह नहीं रहता तो अपने आप ही फिर ईश्वर देता, बिकॉज गॉड कम्स टू नो ना दैट नाउ दिस so and so person has risen above these things. तो जितना चीजों के पीछे भागोगे कोई फायदा नहीं। जब आपको पता ये हमारी सिर्फ मीन्स हैं और उन चीजों में आपका इतना नहीं रहता तो मिल भी जाती हैं, फिर भी you don't immerse yourself in those things. Okay. तो हमने ये बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं that yes, real enlightenment क्या होती है, दुनिया में रह के भी ऊपर रह के सीखना है। We don't have to really get absorbed in this materialistic things. जो भी गुरुजी हम पे कृपा करते हैं वो हमें चीजें दी हैं एंजॉय करने को as a means, not कि वो चीजें ही सिर्फ उन चीजों में ही डूब जाना चाहिए। Okay.
Okay, I think I can read. I've got 5 minutes. Okay, next is charms of the world. कहते once there was an educated young man who decided that he would become a swami. एक बहुत educated बंदा था, उसने कहा मैं स्वामी बन जाऊंगा. He observed how swamis spoke and conducted themselves on his own without treading the path or following any disciplines. He set himself up as a swami with a proper attire and external behavior. तो उसने भी वो attire पहन लिया और ऐसा बिहेवियर कर लिया कि चलो मुझे पता अब स्वामी कैसे बनना है. कहते one day he came to my ashram at Uttarkashi in the Himalayas and requested if he could stay a while. Whenever he spoke with me, his gaze would always settle on my wristwatch. कहते वो जब भी मेरे को देखता निहारता था ना, बस उसकी नजर मेरी wristwatch पे ही जाती थी. He couldn't take his eyes off it actually. Someone had given me an Omega chronometer as a gift. I didn't care whether the watch was a simple watch or the expensive item that fascinated this young man. तो स्वामी जी कहते मेरा तो ऐसे ध्यान होता ही नहीं था कि expensive gift मैंने पहना हुआ है. कहते each time we talked, he would bring up the watch in conversation. He would say, "Oh, what a striking watch! How attractive the design! It must keep excellent time." So he just got smitten by that watch, you know. Swami ji कहते after 3 days of this, I said, "Young man, I'm leaving for Gangotri for a while. Would you take care of this watch for me?" वो भी जान के स्वामी जी ने ऐसी लीला रची होगी ना कि चलो मैं घड़ी छोड़ जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या करता है. कहते as I picked up my blanket and sandals and waved goodbye to my guest, I knew that before long my ashram would be empty of this man and my watch. I was not really intending to go to Gangotri. स्वामी जी कहते मैं असल में थोड़ी जाना चाहता था गंगोत्री. I just wanted to see what would happen. I returned shortly and sure enough the young man and the watch had departed. वो young man जो लड़का था ना भाग गया था watch लेके. कहते in the days that followed my acquaintances asked about my missing watch. जो भी जान पहचान के थे ना स्वामी जी के, उनको हमेशा उस घड़ी के बारे में पूछते थे. I told them it was being used. कि चलो ठीक है किसी के काम आ गई, काम ही आ रही है ना किसी के. I was not concerned. कहते by chance 6 months later I ran into this same young man at the Haridwar railway station. तो स्वामी जी bumped into him, you know, at railway station. तो वो मिल ही गया उनको वहां से. कहते वो बंदा he was so embarrassed. He wanted to run away. He said, "Sir, what I did was terrible." I replied, "You have done nothing to me. If you think it's wrong, don't do it again." तो स्वामी जी में चेंज है कि स्वामी जी कहते कोई ऐसा गुस्सा नहीं किया स्वामी जी ने. कहते चलो मेरे साथ तूने क्या करना, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पर अगर तुम्हें अंदर से लगता है तुमने गलत किया है तो आगे से ये मत करना. Then I noticed that he was not wearing the watch, so I asked him where it was and how it was running. He said, "I have sold it. I needed the money." वो कहता है मुझे एक्चुअली पैसे चाहिए थे, इस करके मैंने वो घड़ी बेच दी. A short time later, the watch was with me again. स्वामी जी कहते हैं अब देखिए थोड़े स्पैन के बाद ना वो घड़ी फिर मेरे पास आ गई. तो कैसे आई? The buyer was my student. जिसको उसने बेची होगी ना और जिसने खरीदी होगी वो स्वामी जी का स्टूडेंट था. Who recognized the watch and returned it to me. So I found the young man again and gave him the watch once more. I said, "If this watch can help you, then you should have it." कहते देखो कैसे उसने किसी को बेची और जिसको बेची स्वामी जी का स्टूडेंट. और स्वामी जी ने फिर दोबारा से जब ये यंग मैन आया उसको दोबारा से घड़ी दे दी. कहते कोई ठीक है तुम ले लो, अगर ये तुम्हारी मदद कर सकती है तो तुम्हें जरूर रखनी चाहिए. कहते at first he could not understand and accept the way I related to him, but gradually he came to see that it is possible to have a completely different attitude towards the things of the world than he had known. कहते this incident affected him. तो उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई. इस इंसिडेंट ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया. This incident affected him so much that he later went back to an ashram that I recommended for self discipline, and today he is a completely transformed person. कहते उसमें देखो इतना चेंज आ गया और आज की डेट में वो completely transformed बंदा है. Many people are unable to face certain things in themselves. They refuse to confront those conflicts, desires, and habits, and they may not like in themselves become rid of. कहते कई बार ऐसे होता है ना, कितने लोगों को पता तो होता ही है किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर्स, हैबिट्स जो उनको पसंद तो नहीं है अपने आप में, पर किसी तरह से छुटकारा नहीं पाते उससे. कहते they don't allow others to know the real selves. वो अपना जो असली जो चीज है ना अंदर की वो दिखाते भी नहीं है किसी को. And continue to put forward defenses and pretenses. तो प्रिटेंड करते रहते हैं कुछ और ही. जैसे कहते हैं ना मुखौटा सा पहने
रखते हैं। कहते with someone somewhere in some relationship we should completely expose ourselves and not keep these embarrassing seeds repressed inside. स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब अपने रिश्ते नातों में हमें अपनी जो असलियत है ना दिखा देनी चाहिए, ये अंदर इसको रिप्रेस करके नहीं रखना है। कहते फिर ये डिले करता है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। These hidden secrets only delay our progress. We project onto others the very things we won't face. During meditation, one allows all these embarrassing thoughts and desires to come up gently, where one can just observe them without becoming involved. In this way, meditation serves an effective tool to recover and live a balanced life. कहते meditation ऐसी साधना है ना, ऐसी चीजें embarrassing thoughts है किसी तरह की भी आए ना, आप उनको gently आने देते हो, इतना ज्यादा उनके बारे में सोचते नहीं, but आप observe करते हो, you just become an observer. फिर वो आपको हेल्प करता है इन चीजों से रिकवर करने को। कहते those who renounce their homes and duties still carry with them deep rooted sanskaras, latent tendencies which derive from past experiences sown in earlier lives. It takes a long time to get free of these samskaras. It requires the constant mental ingestion and creative impression and seeds of spirituality. This cleansing and replacement of mental content is possible if one follows a path of self discipline. कहते जो रिनाउंस भी कर देते हैं ना, देखो उनके जो डीप रूटेड संस्कार है पिछले जन्म को साथ ही लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुटकी बजाते वो दूर हो जाएंगे, ये सेल्फ डिसिप्लिन से दूर होते हैं। कहते too many modern teachers profess to teach spirituality and meditation without discipline. कहते सिखाने वाले तो आजकल बहुत हैं, पर डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं ना। विदाउट डिसिप्लिन कि आप कैसे कर सकते हो। कहते they may introduce sound techniques but without training the students to become disciplined. It is like sowing seed in the soil that was never tilled. कहते self discipline is very important in the part of spirituality. Becoming a swami or a monk is not so important. कहते self discipline बहुत important है, एक स्वामी और monk बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब important क्या है? What is important is to accept a self disciplined life. There needs to be a bridge between life within and without. Discipline is a foundation of that bridge. People should not be tempted by mere techniques but learn to cultivate discipline within themselves. ये तो बहुत सही बात बोली है। आजकल बहुत लोग टेक्निक से सिखाते हैं, कहते हैं उसके क्या है, टेक्निक से क्या है, वो तो मैकेनिकल चीज हो जाती है ना सारी। बट कल्टीवेट करो उन चीजों को, अंदर से लाओ और डिसिप्लिन लाओ। So on that note, thank you Guruji for this beautiful reading. I think we learned plethora and ample of things कि हमें अगर हम पैरेलल कंपैरिजन भी करें तो हमें कितना वो सीखने को मिलता है कि गुरुजी ने हमारा रास्ता कितना सौखा किया है। नहीं तो गुरुजी कहते ना सौखा मिल गया ना, रब इन्हां नूं तां कदर नहीं हैगी है। अगर हमें भी गुरुजी ऐसी कहते ये प्रैक्टिस करो, वो करो, ये करो, ये करो, तो कितना मुश्किल हो जाता। बट गॉड doesn't want us to be in some bondage. He want God, वो तो आए हैं हमें फ्री करने इन चीजों से। So thank you Guruji, thank you so very much for making us read this beautiful book. Thank you Ekta ji, Shilpi ji, and thank you Sangha ji for precious time, and thank you Swami ji. आपकी जर्नी के थ्रू हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, and I hope your spirit जहाँ भी आप हैं, you must be feeling happy that we're reading this book, क्योंकि ताकि हमारी आंखें खुलें और हम जाने कि यस हिमालयन मास्टर्स क्या हैं और स्वामी, रियल स्वामी कौन होते हैं। So thank you Guruji, thank you, and please forgive me because I keep on making mistakes every day. Thank you so very much. Thank you so much Sonia aunty, it was a beautiful reading. Jai Guruji.